Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, I have observed many of you are too much worried about the safety of bank jobs because a lot of rumors, news that is being available in media, and that affects the mindset of people. Some people are asking, sir, whether if I join a bank and something happens to the bank is privatized, whether they will remove us from the job, what is the job safety and all that. Now, you should be very clear that banking is ever growing industry. If we look at the history of banking in India, it is growing along with the population of the country. So, whenever population grows, the banking needs automatically grows. And if an industry is growing, there is always demand of staff. And when there is a demand of staff, the safety of job automatically comes. So this fear is unfounded that if some bank is privatized or remain in public sector, whether we will continue to remain in job or we will be out of job. What will happen tomorrow cannot be forecasted today. Unless you have some definite information, this is all speculation. The only lessons we can draw is from the past. What is the history of banking when it was in private sector, when some of the banks were nationalized, and what can be the inferences out of that? When Indian banking was largely in private sector before nationalization, bank jobs were safe and secure. People were used to join bank and they were used to retire from the bank job. Their salaries were governed by IBA settlement and no instances of reduction of salaries were seen in the past. So as far as job security is concerned, as far as salary is concerned, that is governed by various laws and agreements in banking industry. So a lot of fear that if this bank is privatized, the salary will reduce, job may be at risk. I think it has no logical past history. It is based on assumptions. Some people may be unnecessarily worry about this. But what will happen in future cannot be seen today. Banking is a profession. So if you join banking and acquire good knowledge, you are always in demand. Because a person who is working in scale 1 in one bank, if he possesses good knowledge, he can go to scale 2 in another bank. You must have seen in recent years, lot of scale 2, scale 3 vacancies are coming from different banks and they are taking people, those are having scale 1 experience in one bank or another. So not only you have a scope to have departmental promotion only, the employees, those are joining banking industry can switch one bank to another and move higher in the ladder. So my only advice is, right now your focus should be to get the job, enter into the job, see how dust settles, and work sincerely, acquire knowledge, make yourself employable, make yourself useful to the industry, and don't have unnecessary fears. Because I am finding some people, those who have got selected this year, they are saying, sir, we are not enjoying the success, because some people say
it is meaningless. You are going to a bank that will be privatized, then your job will be at stake. You have to struggle again and all that. I don't think that will happen. Whether banks will be privatized, whether ownership will be shifted, that is a matter of debate. But as far as job security is concerned, as far as usefulness of employees is concerned, as far as wages are concerned, I don't think there will be any threat on that. Because bank employees are always in demand. And there is always shortage of bank employees. If you look at the recent history, the banking is the only industry which is recruiting staff every year, whether it was COVID or pre-COVID or after COVID. There are sectors where recruitment comes once in 3 years, once in 5 years, but banking is a sector where recruitment is going on year after year after year, because there is a demand. So once you are part of a sector where there is always shortage of staff, where there is always demand, and if we make ourselves knowledgeable and employable, we will be always in demand. That is my thought. That is what I learned during my experience in banking. Banking is ever growing industry. This we have to keep in mind. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. रिसेंट वक्त में आप लोगों की काफ़ी क्वेरी है कि सर बैंक जॉब सेफ तो है ना, बैंक जॉब में सैलरी तो नहीं कम हो जाएगी, बैंकिंग का भविष्य क्या है. अगर हम फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब एक अंदाजा है, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने नहीं है आप कैसे कह सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. पर एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को जानने का कि हिस्ट्री क्या है उस सेक्टर की. सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है, बैंकिंग एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है किसी देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है. और यही कारण है बैंकिंग हमेशा ग्रो करता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ग्रोइंग होती है और इकोनॉमी भी ग्रोइंग होती है. चाहे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कम हो या ज़्यादा हो, बट इट इज़ ऑलवेज ग्रोइंग. बहुत कम ऐसे ईयर्स होते हैं जब श्रिंक होती है इकोनॉमी. इकोनॉमी ग्रो ही करती है, पॉपुलेशन भी ग्रो ही करती है, तो बैंकिंग नीड्स भी बढ़ती जाती है. अब जब बैंकिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो नेचुरल स्टाफ चाहिए उसके लिए. तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो इस सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, यदि वो एम्प्लॉयबल हैं, मीन्स उनके पास वो स्किल हैं जो एक अच्छे बैंकर के पास होनी चाहिए, तो उनको किसी तरह का थ्रेट होना या किसी तरह का भय होना कि उनकी नौकरी चली जाएगी, मेरा ख्याल वो किसी भी तथ्यों पे आधारित नहीं है. क्योंकि अगर हम पास में देखें तो कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहाँ पर बैंकिंग में रिट्रेंचमेंट्स हुई हो. बैंकिंग में हमेशा शॉर्टेज रही है, बैंकिंग में हमेशा रिक्रूटमेंट रही है, और बैंकिंग में कोई ऐसे इंस्टेंसेस भी नहीं देखे गए हैं कि कहीं पर वेज कट हुए हो. क्योंकि जब बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में थे, जब नेशनलाइज नहीं हुए थे, तब भी बैंकों के अंदर जो तनख्वाहें थी, जो बैंकों में जो फैसिलिटीज़ थी, वो वेरियस एग्रीमेंट्स के अंतर्गत थी, IBA सेटलमेंट के अंतर्गत थी, और वो अच्छी थी. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर था तो सैलरीज बहुत कम थी, सरकारी हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गई. ऐसा नहीं है. बैंकिंग के अंदर जो वेज रिविजन्स हैं वो सेटलमेंट्स के ऊपर आधारित, काम पर आधारित होते हैं. तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी है. हर 5 साल बाद वेज रिवीजन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आगे लोग बढ़ते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि बैंकिंग क्योंकि एक प्रोफेशन है, तो यदि आपके पास बैंकिंग स्किल्स हैं, आपके पास बैंकिंग नॉलेज है, तो ना केवल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकते हैं, आप इंटर ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली स्केल 2 की वैकेंसीज काफ़ी बैंक निकाल रहे हैं, स्केल 3 की भी निकाल रहे हैं.
जहाँ दूसरे बैंक के लोग जो स्केल 1 में जिनका एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करते हैं और वो हायर रैंक पे चले जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी बैंक में स्केल 1 में लग जाता है और फिर वो एक अच्छी नॉलेज एक्वायर कर लेता है तो वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, उसको किसी तरह के डर नहीं होते। अब कई लोग इस बार सेलेक्ट हो गए हैं, वो कह रहे हैं सर सिलेक्शन का मज़ा नहीं आ रहा, रोज़ न्यूज़ आ जाती है कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा, वो बैंक प्राइवेट हो जाएगा, हमें डर लग रहा है हमारी नौकरी चलती रहेगी या चली जाएगी या तनख्वाह कम हो जाएगी। मेरा ख्याल ये सब अननेसेसरी डिस्कशन है। ऐसा कोई इंस्टेंस देखने में नहीं आया जहाँ जॉब थ्रेट पे आई हो लोगों के ओनरशिप चेंज से, और ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आया कि वेजेस कट हुई है। बैंक सरकारी रहते हैं या प्राइवेटाइज हो जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अननेसेसरी फियर रख के कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा ख्याल हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यदि हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमें सबसे पहले एक नौकरी लेने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उस नौकरी को लेके स्किल्स डेवलप करनी चाहिए और अपने को इतना काबिल बनाना चाहिए कि हम हायर से हायर पोजीशंस में उस सेक्टर में जा पाए। और आज की डेट में बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जो आपको ग्रोथ दे सकता है, प्रोवाइडेड आप बैंकिंग को एंजॉय करें, प्रोवाइडेड आप बैंकिंग की नॉलेज एक्वायर करें, प्रोवाइडेड आप अपने आप को एक यूजफुल एम्प्लॉय साबित करें। काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कुछ लोग खुश भी रहते हैं, ये आपकी अपनी माइंड सेट है। मेरे हिसाब से आज की डेट के अंदर इस तरह की डिस्कशंस में पढ़ना और अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना ठीक नहीं है। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है, सेलिब्रेट करिए, खुश होके नौकरी ज्वाइन करिए और नॉलेज एक्वायर करिए, काम सीखिए, अपने को काबिल बनाइए, ये आपके काम आएगा। अननेसेसरी सोशल मीडिया की डिस्कशन किसी के काम नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।